Welcome to the YouTube channel of Parth Academy. Today we are going to discuss a topic of Indian geography, that is natural vegetation. The natural vegetation is the most visible index of any region. Natural vegetation, you can say it's a forest cover of any region. ये forest cover है किसी भी region का. The natural vegetation is mainly depend on the soil of the region. किसी भी रीजन की सॉइल कैसी है इस पर डिपेंड करेगा कि नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट कवर कैसा है. द सेकेंड थिंग विच इज बेसिकली influences the natural vegetation is the climate of the region. The climate can be categorized as the temperature and the rainfall. किसी भी रीजन का रेनफॉल और टेम्परेचर वहाँ के फॉरेस्ट कवर को इन्फ्लुएंस करता है. एंड द थर्ड वन इज द टोपोग्राफी. The topography of the region also influences the natural vegetation. In general, the natural vegetation can be categorized on the basis of distance from the coast. Coast से जितनी भी हमारी distance है, for example, ये हमारा sea है, या you can say it's a coastal region. As we move away from the coast towards the center of the continent, मान लो ये हमारा coast है, वो हमारा continent का center है. So as we move away from the coast toward the center of the continent, temperature of the region increases. Temperature क्या होगा? Increase होगा. And the rainfall of the region decreases. और rainfall क्या होगा? Decrease होगा. तो अगर हम कोस्ट पर हैं तो हमें टेम्परेचर लो मिलेगा और रेनफॉल हाई मिलेगा. और अगर हम कॉन्टिनेंट के सेंटर पर आ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है और रेनफॉल कम हो जाता है. एंड दैट इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल इफेक्ट ऑफ द रीजन. ये कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहलाता है. अब इस बेसिस पर हम पूरे रीजन के वेजिटेशन को ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो फॉरेस्ट हमें कोस्ट के पास मिलते हैं, दीज फॉरेस्ट आर नोन एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं हम? एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच मेंटेन द ग्रीनरी थ्रू आउट द ईयर. ये वो फॉरेस्ट हैं जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं. इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है. द सेकेंड फॉरेस्ट बेसिकली लाइज इन द इंटीरियर रीजन एंड दीज आर नोन एज द डेसिडियस फॉरेस्ट. इनको हम क्या बोलते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट. सिंस इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे यहाँ मिलेंगे दोज आर नोन एज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड द डेसिडियस फॉरेस्ट आर नोन एज द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाएंगे. सिंस एज वी मूव अवे फ्रॉम द कोस्ट टुवर्ड्स द सेंटर, रेनफॉल डिक्रीजेस. तो यहाँ पर जो रेनफॉल होगी वो रेनफॉल क्या होगी? ज़्यादा होगी. So the rainfall of the tropical evergreen forest is more than 200 centimeters. यहाँ पर rainfall 200 centimeters से ज़्यादा मिलेगी. In the deciduous region, the rainfall is around 70 to 200 centimeters. यहाँ पर rainfall 70 से 200 centimeter मिलेगी. At the interior, the center of the continent, अगर हम continent के center पर आ जाएं, तो in this region we found the desert. यहां हमें क्या मिलता है? डेजर्ट मिलता है. ठीक है. इन द डेजर्टिक रीजन द रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर. तो डेजर्ट क्या है? डेजर्ट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेशन विच रिसीव्स रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर. द ओनली क्राइटेरिया विच डिफाइन कि व्हाट इज डेजर्ट इज द रेनफॉल. इफ द रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर देन द वेजिटेशन इज नोन एज द डेजर्ट. ठीक है. इसके पहले हम यहां डिस्कस करते हैं the evergreen forest. Since we are in a tropical country, so the temperature in the tropical evergreen forest is around 22 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. यहाँ पर टेम्परेचर कितना मिलेगा? 22 डिग्री से 25 डिग्री. ऑन द अदर हैंड अगर हम डेसिडियस फॉरेस्ट में आते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द कोस्ट टेम्परेचर इंक्रीजेस. तो यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस. यहाँ हमें 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा. अब अगर हम इसको भी देखते हैं तो कोस्ट पर रेनफॉल हाई होगा एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर द रेनफॉल डिक्रीजेस ग्रेजुअली. इससे अंदर जाएंगे तो रेनफॉल क्या होगा? ग्रेजुअली डिक्रीज होगा. इन दिस वे वी कैन डिवाइड द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इनटू टू पार्ट्स. हम इस बेस पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट इज नोन एज द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलेंगे. एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द ट्रॉपिकल
सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये क्या कहलाएंगे? ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाएंगे। सिंस द रेनफॉल डिक्रीजेस ग्रेजुअली, तो यहाँ का जो रेनफॉल होगा वो रेनफॉल आपको मिलेगा अराउंड 250 सेंटीमीटर प्लस। यहाँ पर रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड, इन द ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट द रेनफॉल इज बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं यहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, जैसे जैसे हम अंदर आते जाएंगे रेनफॉल डिक्रीज होता जाएगा। सेम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, पहला क्या कहलाएगा? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाएगा। एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। दूसरा हमारा क्या होगा? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होगा। अगेन द रेनफॉल डिक्रीजेस ग्रेजुअली, तो यहां पर जो रेनफॉल देखने को मिलेगी दैट रेनफॉल इज अराउंड 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। यहां पर रेनफॉल 150 से 200 मिलेगी। इन द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट द रेनफॉल इज अराउंड 70 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। द रेनफॉल डिक्रीजेस ग्रेजुअली। लेट्स से इन द डेजर्टिक जोन, the desert is a type of vegetation which receives rainfall less than 25 centimeter. We can divide the desert into two parts. The first is the region where we have the high temperature. The second is the region where we have the low temperature. The region which has a high temperature and low rainfall is known as the hot desert. इसको हम क्या बोलेंगे? हॉट डेजर्ट। And the region which has the low temperature and the low rainfall is known as the cold desert. The hot desert is further categorized into two types. The first is sandy desert, where we have the sands. The second one is the stony desert, where we have the stones. The example of sandy desert in India is the Thar desert, or you can say the Rajasthan desert. And the example of the cold desert in India is the region of Leh and Ladakh. These are the desert. The temperature of the hot desert is around 30 degrees Celsius, and the temperature of the cold desert is around 5 degrees Celsius. These are the classification. Tropical wet evergreen forest, rainfall more than 250 centimeter. Tropical semi evergreen forest, rainfall 200 to 250 centimeter. Tropical moist deciduous forest 150 to 200 centimeter. Tropical dry deciduous forest 70 to 150. The temperature of the tropical wet evergreen forest is 22 to 25 degrees Celsius, and the temperature of the tropical semi evergreen forest is the same. In the same way, the tropical moist deciduous forest temperature 27, tropical dry deciduous forest temperature 27. Now this region, the outskirt region of the desert, where the temperature or the rainfall decreases. The rainfall is around 25 centimeter to 70 centimeter, and the rain temperature is around 27 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. That means we have the sufficient rainfall which helps the growth of the plant, but the issue is that temperature is very high that restrict the growth of the plants. That's why this region is basically the region of grasses, and they are known as the grasslands. This is the basic reason that the outskirt region of the desert is surrounded by the grasslands. These are the grasslands basically. Now again, the second parameter, humidity. The humidity in the region. Tropical wet evergreen forest, high rainfall, high temperature. The humidity is high. The humidity is more than 75 centimeter in the tropical wet evergreen forest. In the tropical semi evergreen forest, the humidity is around 70 centimeter, 70%, around 70% in the tropical semi evergreen forest. In the tropical moist deciduous forest, humidity is around 60% to 70%. In the tropical dry deciduous forest, again the humidity decreases around 50% to 60%. Just look at the, as we move away from the coast, the humidity decreases because the amount of rainfall in the region decreases. The decrease in the amount of rainfall decreases the amount of content in the air. Next, after the humidity, the next is the canopy.
अगला कैनोपी है. द नेचुरल वेजिटेशन और द फॉरेस्ट ऑफ एनी रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स. किसी भी रीजन को हम 4 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं फॉरेस्ट का. द फर्स्ट इज नोन एज द कैनोपी. Canopy is basically a roof-like structure. Is a roof-like structure where all the plants are of same height. That is known as the canopy of the region. That is the canopy. ठीक है. In the tropical wet evergreen forest, since the temperature is high, the rainfall is high, the growth of the plant is high. That's why we have a well-developed canopy in the tropical wet evergreen forest. In the tropical semi-evergreen forest, rainfall decreases and the temperature is almost same. The canopy is not as developed as in the tropical wet evergreen forest, but the canopy is developed. It is developed, but in comparison to the tropical evergreen forest, the canopy reduces. In the tropical moist deciduous forest, temperature increases, rainfall decreases, so the growth of plant restricted. The growth of plant restricted, that the canopy is not well developed. It's around moderate. In the region of tropical dry deciduous forest, again the rainfall further reduces, temperature increases, so the canopy is not well developed. Not well developed in the region of tropical dry deciduous forest. Again, in the grassland, we do not have the canopy. In the desert, we do not have the canopy. Next is, after the canopy, what we are required to find out, what are the major species of tropical wet evergreen forest, tropical semi-evergreen forest, and further. And the region in which these forests are found. These are the basic questions which are asked in the UPSC or the PSC. The next is the species of trees found in these forests. In case of tropical wet evergreen forest, the species of trees are found rosewood, mahogany, ebony and any. In case of tropical semi-evergreen forest, the trees are kadam, kusum, cedar and hemlock. In case of tropical moist deciduous forest, the trees are shisham, amla, sandalwood. In case of tropical dry deciduous forest, the trees are teak, axlewood and tedu. These are the species, important species of trees which are found in this region. Apart from this, the forest or the natural vegetation can be categorized in the mountainous region also, and those are known as the mountain forest. The mountain forest of any region can be categorized into 3 types, and it is on the basis of the height. As the height increases in any region, as the height increases, temperature decreases and the rainfall decreases. At the height of 1000 meter to around 50 meters, the forests are found which is known as the temperate forest. These are known as the temperate forest. From the height of 1500 to around 3000 meters, the forests are found which is known as the pine forest. And from the height of 3000 to 4000 meters, the forests are known as the alpine forest. So in case of mountainous region, we can categorize the forest into 3 types. The first is temperate, the second is pine and the third is alpine. Next, what we are required to find out कि distribution of these forests in the India में इनका क्या क्या distribution है. इस distribution को समझने के लिए हम एक और लेक्चर में मिलेंगे. जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन पे आइडेंटिफाई कराएगा. For now, thank you. Please like and subscribe the channel.